Good morning, students. I welcome you all to class 11, first class of history. Okay, so this is just an introductory class of what you are going to learn in class 11. You have already learned a lot in class 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, you learned about history for the first time in class 6 when you learned in great detail about ancient India. You learned about the Indus Valley civilization. Okay, now what is important is again you will be learning about Indus Valley civilization, but you will be learning in great detail in class 12. There are a lot of things, obviously history doesn't change much. Whatever you have already learned, you will be obviously learning it even further. जितना हमने पढ़ा है क्लास 6, 7, 8 में और 9th and 10th में obviously वही रिपीटिशन है and obviously there are a lot of new things, but जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसे ही और डिटेल में पढ़ेंगे. Sometimes what happens is that whatever you must have started in these junior classes, you must not be remembering everything. Okay, so that's not obviously you're getting a second chance to learn about all those things. But what is important are concepts. Your concept should be clear. As far as dates are concerned, this is very important to understand. When somebody says 16th century BCE, what does it mean? If I ask you a simple question that in 600 BCE Gautam Buddha existed. Okay, वो बुद्धिज्म का दौर था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 600 BCE में. How far back am I talking about? आज से कितने साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ? That is an important point. How will you relate 600 BCE? What do you basically understand? कि ये 600 BCE का मतलब क्या है? For that you need to understand few terms. If you know them, it is very good. And this is very simple that you are taught in class 6. But some of you जिनके concept clear नहीं है, for them or for their knowledge, I think it is important that I should discuss this date line first before I talk about anything else. Now there are few terms that will appear and that keep appearing in history. And इनके मतलब भी बदलते रहते हैं. पहले हम obviously जिसको क्रिश्चियन एरा कहते थे, अब उसे हम कॉमन एरा कहने लगे हैं. So there are few dates, जितने भी dates अब आपके सामने 11th and 12th में आने वाली हैं and even future में, there you will see these letters. Somewhere you will find CE, somewhere you will find BCE. Okay, and in front of some date you may even see only this letter, single letter C. Okay, and if you are talking about the ancient बहुत पुराने पीरियड की हम बात कर रहे हैं, then obviously वहाँ पर MYA भी आपको समझना होगा. Okay, so let us see what this date line means. Date line is similar to number line. So number line में 0 होता है, and on the right side you have positive numbers, and on the left side you have negative numbers. Okay, and similarly you also have a date line. Date line में see, historians had a problem. When they started writing history, they wanted to obviously have a reference point कि किस point से हम history को start करें. And because ये Europeans ने लिखा है, and the Europeans, for them obviously the birth of Christ was an important period, so they considered the birth of Christ, the period of Christ as 0. जैसे number line में 0 होता है, डेट लाइन में उन्होंने पीरियड ऑफ क्राइस्ट को 0 मान लिया, एंड पीरियड ऑफ क्राइस्ट के बाद जो भी घटना, जो भी इंसिडेंट्स हुए, वहाँ पर जो उन्होंने डेट्स लिखी, उसके आगे उन्होंने लेटर्स यूज किए CE. ओके, विच मीन्स क्रिश्चियन एरा. लेकिन अभी क्रिश्चियन एरा वर्ड भी यूज नहीं होता है. द वर्ड दैट इज यूज्ड इज कॉमन एरा. अभी 2021 एक्चुअल में हमें उसका भी CE लगाना चाहिए. सो 2021 CE मीन्स दैट क्राइस्ट के पीरियड के बाद, क्राइस्ट के जन्म के 2021 साल बाद ये अभी जो डेट है वो है. ओके, सो दिस पीरियड इज कॉल्ड रिफर्ड टू एज कॉमन एरा. अभी जो पीरियड चल रहा है हम उसे कॉमन एरा कहेंगे. एंड
क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट वॉट एवर हैपेंड विल बी टर्म्ड एज बिफोर क्रिश्चियन एरा. अभी का पीरियड इज क्रिश्चियन एरा, सॉरी कॉमन एरा, एंड द पीरियड बिफोर दिस कॉमन एरा we will add one more letter and we will put B and it will become BCE, that is before common era. Okay, so first we need to understand these terms. Common era basically means जो अभी present चल रहा है, क्राइस्ट के जन्म के बाद कितने साल हो गए. So if you say 2021, that means क्राइस्ट आज से 2021 years ago he used to exist. So if you are talking about 2050, that means obviously Christ का जो पीरियड है उसे जीरो मानकर ये डेट्स अभी हम जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखी जाती है. We don't generally put CE, so 2021 हम CE लगाते नहीं हैं, but obviously जब हिस्ट्री में हम ये डेट्स यूज करेंगे then you will find these letters. Okay, so CE and BCE. BCE is before the common era and CE is the present common era. In front of some date you will be finding the single letter C dot. And what does this C dot means? ये इसका लिटिल मतलब सिरका है, CIRCA, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है approximate. Sometimes historians are not very sure about the date, and a lot of dates about Indus Valley civilization you will find that अलग-अलग बुक्स में Indus Valley civilization की जो dates हैं वो भी अलग-अलग लिखी हुई हैं, because historians are not very sure about the date. ये बहुत पुरानी बात है, exact date पता करना उनके लिए मुश्किल होता है. So sometimes they refer to that period and जब वो एक approximate अंदाजा लगाते हैं और जब उन्हें clear, when they are not clear about the date, they write C. So if I say C dot 1500 BCE, which means approximately 1500 BCE में ये incident हुआ था. और ये जितनी पुरानी चीज़ें हैं उनमें ये ज़्यादा हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम आता है, एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट डेट फॉर सम रीजन, एंड दे वांट टू रिफर टू दैट पीरियड एज अप्रॉक्सीमेटली. 1500 हो सकता है, 1600 हो सकता है, 1400 हो सकता है. सो दे आर, व्हेन दे आर नॉट श्योर, दे गिव यू एन अप्रॉक्सीमेट डेट, एंड अप्रॉक्सीमेट वर्ड लिखने की बजाय व्हाट दे राइट इज दे सिंपली पुट अ सिंगल लेटर C. अगर किसी भी डेट से पहले C लिखा हुआ है, that means that date is approximate. Okay, then there is also one term which is MYA. MYA is simple, it is a short term for million years ago. Okay, and how much is a million? जैसे हम लाख, करोड़ and अरब में जैसे हम गिनती करते हैं वो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग है. ऐसे ही जो स्टैंडर्ड यूरोपियन सिस्टम है that is in millions and billions and trillions. Okay, 1 million is equal to 10 lakh, that you need to remember. Okay, हिस्ट्री में obviously जो डेट्स हैं वो मिलियन में आपको मिलेंगी क्योंकि ये यूरोपियंस में लिखी है हिस्ट्री, एंड मिलियन बेसिकली मीन्स 10 lakhs for अंडरस्टैंडिंग कि 1 मिलियन होता कितना है. ओके, तो उसे हम MYA कहेंगे, which simply means million years ago. Now that is how a date line looks like. Similar है, नंबर लाइन समझते हैं तो आप डेट लाइन समझना बहुत मुश्किल नहीं है. एंड जीरो, I should be writing zero actually there. वहाँ पर लिखना चाहिए the period of Christ. But for your reference आप इसे relate कर पाए नंबर लाइन से, इसलिए आप use zero. But here zero basically means the period of Christ. So Christ के बाद हुआ. So if I am saying 2021, so 2021 years Christ after the birth of Christ. Okay, so today this is 2021 years. So 2021 years have passed after the birth of Christ. And when we talk about the period, which the things, the incidents that happened before the Christ was born, and we simply put our letter B, and this is BCE. So 1000 BCE and 1000 CE. What is the difference? And I hope you are not getting confused. 1000 CE and 1000 BCE के बीच में कितना गैप है? And if some of you are thinking कि 1000 साल का फर्क है, 1000 years, then
then you're wrong, because this is 2000. बहुत सिंपल है, आई एम श्योर ज़्यादा लोगों के concepts clear होंगे, and one or two maybe आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए I'm trying to clear this. So if we go one from here, if we go 1000 years back, then we will reach the zero period of Christ पहुंचेंगे. वहाँ से फिर हम 1000 years और पहले जाएंगे, तब जाके ये डेट आएगी 1000 BCE. So the difference between 1000 CE and 1000 BCE is basically 2000 years. Okay, so if I say that 2500 BCE, अगर मैं कोई डेट की बात करूँ, तो 2500 BCE आज से कितने साल पुराना है? आज से कितने साल पुराने की बात हो रही है? 2021 क्राइस्ट के जन्म के बाद ये पीरियड प्लस 2500 years और पहले जाएंगे. So approximately 4571 years पहले की मैं बात कर रहा हूँ. Okay, so that is how you must relate to these years. ये dates बहुत आएंगे, BCE, AD, 16th century, 18th century, BCE, CE. So don't get confused. You have to be you don't have to remember dates. Okay. CBSE ने भी आपके बुक में है, if you read the foreword, then historians ने कहा है कि as students you don't have to you have to learn, you have to know about the dates, but what they are saying is कि आपको उन्हें रटना नहीं है. टाइमलाइंस आपके बुक में दी गई हैं, they try to present you a timeline कि कब कौन सी चीज़ हुई, but this is more like a dictionary. उसको रेफर करने के लिए आपको इजी हो, किसी से को पता करना हो कि ये कब हुआ है, तो उस टाइमलाइन में जाके आप उसे देख पाओ. Some dates are more important than others, okay, but some dates you need to remember, and some dates obviously you have to study them, but you don't have to obviously remember each and every date. It's not possible. इसीलिए आपको हर डेट को रटना ज़रूरी नहीं है, आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, रटने की इतनी ज़रूरत नहीं है. ये जो सब्जेक्ट है जिसे कभी सोशल स्टडीज़ कहा जाता था, इसे भी क्लास 9th and 10th में सोशल साइंस कहा जाने लगा है. एंड दिस साइंस वर्ड इज बीइंग यूज्ड. पॉलिटिकल स्टडीज़ नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस है. एंड हिस्ट्री इज ऑल्सो साइंस. हिस्ट्री में वही चीज़ हम पढ़ते हैं जिसे साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है. सो हम रामायण महाभारत के बारे में पढ़ते ज़रूर हैं, बट वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. उसे एक कहानी, एक एपिक की तरह पढ़ते हैं. Okay, and we don't go into details of whether Ram existed or Krishna existed, because science has not been able to prove that. Okay, तो science में हम Christianity और ये religions हैं इनको पढ़ते ज़रूर हैं, but we don't go into the details of that religion. We don't go into the details of those personalities जिन्हें हम gods कहते हैं, because scientifically they have not been proved. So one thing that we need to remember is that today whatever we study in these subjects, obviously this is all now science, and इसमें जो कुछ प्रूव किया जा चुका है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं. So early societies, historians are trying to reconstruct their lives. वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय ह्यूमन बींग्स कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनके शेल्टर्स क्या थे, whether they used to stay in caves and all. ये caves में पेंटिंग्स के लिए उन्होंने कलर कैसे बनाया, how they used to communicate, how they used to express themselves, उनकी लाइफस्टाइल कैसे थी. वो हंटिंग करते थे and they were gatherers. उनके बारे में जानने की historians ने reconstruct करने की कोशिश की. And what they have studied is they have studied the bones of early human beings. कि शुरुआत के human beings दिखते कैसे थे, उनके physical features कैसे थे. ओके, तो उनके बोन स्ट्रक्चर को पढ़ा है, उनके बोन्स को स्टडी किया है. हिस्टोरियंस हैव स्टडीड देयर टूल्स, दो स्टोन से बने हुए टूल्स, प्रिमिटिव टूल्स, उनसे उन्होंने समझने की कोशिश की है कि हिस्टोरियंस ये प्रिमिटिव लोग थे, ये किस तरह से रहते थे. ओके, सो दिस इज अबाउट अर्ली सोसाइटीज. अर्ली सोसाइटीज इवॉल्व कैसे हुई. ओके, सो द archaeologists, what they are trying to reconstruct is the beginning of human existence from the remote past. How human beings first emerged in Africa. They believe that obviously life Africa में originate हुई, and how archaeologists have studied these early phases from the remains of bone and some tools. Okay,
एंड उस समय के टूल्स और उसके स्टोन टूल्स की बात हो रही है। टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ अर्ली पीपल, इनको पढ़कर, इनको रिसर्च, इनको जानकर, by studying the bone structure, by studying these bones and by studying their tools, they are trying to reconstruct their lives कि ये human beings उस समय के कैसे रहते थे। So to reconstruct the lives of early people, shelters where they lived, वो कहाँ रहते थे, the food they ate by gathering and plants they produced or hunting animals and the ways they express themselves, there are different questions हैं जिनके आंसर्स आर्कियोलॉजिस्ट दे कीप ट्राइंग टू फाइंड आउट, ओके, थ्रू डिफरेंट मीन्स। अदर डेवलपमेंट्स वाज द यूज ऑफ फायर एंड लैंग्वेज, द इन्वेंशन, द डिस्कवरी ऑफ फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। इससे पहले वो रॉ मीट खाया करते थे, बट फायर ने उन्हें ऑब्वियसली वो चीज़ दी वेयर द फूड बिकेम टेस्टियर, दे स्टार्टेड ईटिंग मोर, दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर हेल्दी एंड कुक करके खा सकते थे। सो द यूज ऑफ फायर एंड लैंग्वेज, ये फिर लेटर पीरियड के डेवलपमेंट्स हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द डेट्स, ओके, देयर आर फ्यू डेट्स दैट यू शुड रिमेंबर एंड आई विल बी रेफरिंग टू 4 dates here. First, human-like creatures. As you know that life originated in water. And water से obviously life came on land, and from land obviously birds it has gone into the air. Okay, तो life का बहुत टाइम लगा है, लाखों साल लगे हैं हमें obviously human beings में evolve होने के लिए। Evolution क्या होता है? Evolution through a different time period, through different changes होते जो चीज़ different forms में आती है, जैसे हम evolution कहते हैं। Okay, now this year 5.6 million years ago, 5.6 million years ago means 5 million means 50 lakhs and 0.6 means 60,000. So 50 lakhs 60,000 years पहले क्या था? They were human-like creatures. They were not humans. They resembled human beings. Okay, and they were human-like creatures. And then somehow हम बाद में देखते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो गए, ये गायब हो गए, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वैसे ही अब बाद में फिर ये खत्म हो गया। There might be different reasons why they became extinct, और फिर ये दिखाई नहीं देते हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। And then 1.6 million years ago, that is 10,60,000 years, आज से 10,60,000 years पहले हमें जो पता चलता है वो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। ना मॉडर्न ह्यूमन बींग्स उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने इसलिए कहा है बिकॉज दीज ह्यूमन बींग्स रिजेंबल्ड अस। प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग से मिलते जुलते थे ये, और जो प्रेजेंट फॉर्म में जो ह्यूमन बींग्स हुए हम हैं, इस फॉर्म में हम इसके पाए जाने लगे अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मिलियन ईयर्स, 10,60,000 साल पहले ह्यूमन बींग्स जैसे आज देखते हैं वैसे ही ह्यूमन बींग्स अर्थ पर पाए जाने लगे। उससे पहले जो ह्यूमन बींग्स थे वो ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे, दे वर मोर लाइक एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स का मिक्स, अगर आप समझ सको। सो दैट इज हाउ दीज ह्यूमन बींग्स वर, अर्ली ह्यूमन बींग्स, एंड उनका टाइम पीरियड है 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। बट प्रेजेंट ह्यूमन बींग से रिजेंबल करते हुए ह्यूमन बींग्स जो थे वो 1.6 मिलियन ईयर्स अगो ऑब्वियसली पाए जाने लगे। देन दे लर्न अबाउट they became food gatherers, they became hunters, they started hunting for survival, they started living in caves and all, and then later बाद में जाकर they learned about agriculture. Obviously slowly and slowly they started finding out कि ये फ्लावर्स कब ब्लॉसम होते हैं, कब फ्रूट्स आते हैं, कौन सी फसल खाने लायक है, कौन सी नहीं है, एंड दे स्टार्टेड डूइंग सेटल्ड एग्रीकल्चर। सेटल्ड एग्रीकल्चर जब एक जगह स्थायी तौर पर रहकर इंसानों ने खेती करना शुरू किया, तब हम उसे सेटल्ड एग्रीकल्चर कहेंगे। सेटल्ड एग्रीकल्चर एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का भी फॉर्म होता है जो क्लास 10 में आपने पढ़ा है, दैट इज अबाउट स्लैश एंड
नॉर्थ ईस्ट में झूमी के नाम से जाना जाता है, where people obviously do not do agriculture on the same spot, they keep changing the places. But settled agriculture, when human beings they started settling down एक ही जगह रहकर, because एक फसल अगर आपने लगाया है, then it will take some time to ripen and you will have to stay at the same place. And when they started staying at the same place, obviously उन्हें domestication of animals की जरूरत पड़ी, उन्होंने animals को domesticate करना शुरू किया. And this was also the period when they obviously learned about settled agriculture and they started domesticating animals. But not all human beings they started doing this settled agriculture. जहाँ पे land fertile था, जहाँ पे लोगों ने इसको सीख लिया, वो करने लगे. But others obviously still led a nomadic life. अभी भी इधर उधर घूम रहे थे. अभी भी in fact even today not everyone is into settled agriculture. India में जो tribals हैं, they are still doing shifting agriculture. वो अभी भी slash and burn agriculture कर रहे हैं. There are a lot of nomadic communities which we find in Kashmir, in Himachal, in Rajasthan, जो कि nomads हैं, जो कि एक जगह पे स्थायी तौर पे नहीं रहते हैं. Okay, but ये जो development था, ये जो settled agriculture का जो development था, वो आज से 10,000 साल पहले, 10,000 years ago, we see that human beings they obviously started doing settled agriculture and they started living in cities proper तौर तरीके से, civilized तरीके से obviously, and they learned this modern way of life which we get to see in Mesopotamia and Indus Valley civilization, that they were proper cities with proper drains, with obviously good houses and good construction work that we see in both these civilizations. So early cities came up 5,000 years ago. So you try and remember these 5 dates. 5.6 million years ago, human-like creatures they existed, then they became extinct, and abhi modern human beings which look like the human beings of today, they existed 1.6 million years ago. Human beings they learned settled agriculture 10,000 years ago, and they started living in cities 5,000 years ago. So this is just an introduction that I would like to give you, that I have given you. And in the next class, we will move on further into this chapter and try and find out how historians have tried to reconstruct the lives of people, of those early human beings. Okay, so this early societies, this is the first chapter that we are studying, and we will go into the details in our next class. Okay, so that's all in this class. Thank you very much.